Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning to Good all. morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning to all of you. In the previous class, we have discussed about this, that regarding the Upanishads and the school of philosophy. So, if you have any problem, you can ask. Because from that place, that's okay. Now listen, when we talk about the school of philosophy, सर आप तो वाइस बेगर पे थे ना? हाँ तो उसके बाद ही तो है, वो तो जस्ट स्टोरी Yes, sir. मैंने बता दी थी आपको शायद. सर अभी आधा बताए थे, सर बता दिए थे. चलिए सर दोबारा पूरा से नहीं सुन लो. बताए थे. अच्छा सुन लीजिए, स्टोरी सुनिए. द वाइस बैगर, द वाइस सर बैगर. पूरा बता दिए थे. चलिए नहीं बताए थे, No, आधा sir. बताए थे, पूरा बताए थे. अगेन लिसन इट. So don't carry things. Again I will explain, and just I will take 2 to 3 minutes to finish this. This is the story of the wise beggar, in which how a wise beggar satisfied with his statements, and we can in the Shastat, little bit story. Listen this, the wise beggar. So when we talk about the beggar, beggar basically related to the bhikkhus. Bodh monks are known as bhikshuk, and the female nuns are known as bhikshuni. So this one, when we talk about the wise beggar, this is the incidence of Chandogai. Upanishads. So this is a story of the two sages, Shaunak and Abhiprantin. This Shaunak and the Abhiprantis were also the sages, but related to Hindu religion. And when you talk about this, the Chandogya Upanishads, so this Bhikkhuk is related with whatever Buddhist religion.
So how he talked with these two sages, and diplomatically, or we can say in a very wise way, he just give the answer to that great sages. So the sages who has make the make questions with that person, and we can say also the Buddhist monks also make some question and give the answer of that two sages, Shaunak and Abhiprantin. So when we talk about this Shaunak and Abhiprantin, then on that day the Buddhist monk reached to two sages where they start to take the meal. So he asked, just he begging for the food. Then, so what they said, we can't spare anything for you. मतलब हम कुछ भी तुम्हारे लिए छोड़ने वाले नहीं हैं. And regarding Shaunak, to worship, and talk about the Shaunak and Abhiprantin, they are worshipping about the universal soul. Listen about this. When we talk about the universal soul, we have discussed about this. Universal soul. Discuss about this. So, universal soul, and other one is what? Individual soul. Individual soul. Clear? So, when we talk about this individual soul and regarding the attachment with the universal soul, it is also an Atma. And whenever we talk about the universal soul is related with Paramatma. So don't confuse with the universal soul. They are worshipping the Paramatma, who is the creator of this world. Clear? So in that sense, once as they sat down to eat, जैसे वो बैठे, एक भिखारी आया and demanding for the food. So what the Abhiprantin, the Shaunak sages said, we can't spare anything for you, कि हम कुछ भी तुम्हारे लिए छोड़ने वाले नहीं हैं. Shaunak said, learned sirs, whom do you worship? Then that wise beggar, we can't say at that time he's a wise, but after the final talking or conversation, we concluded, yes, that beggar was wise, who demanding the food for two sages, demanding the food from the two sages, and the two sages were the Abhiprantik and Shaunak. Then, अब किसकी पूजा करते हैं? Yes, the beggar asked, the universal soul, उस परम पिता की. Then, Abhiprantin replied, Abhiprantin बोलता है, oh, it means that you know that the universal soul fills the universe. इसका मतलब आप जानते हैं कि जो परम पिता है, जो यूनिवर्सल सोल है, जिसको सुपर सोल भी कहते हैं, वो सबका पेट भरता है. तो जब सबका पेट भरता है तो साधारण सी बात है कि उस बैगर का भी पेट भरेगा जो उस ऋषि मुनियों का पेट भर रहा है. yes we know that, the sages nodded. yes, हाँ हम जानते हैं. उन्होंने सर हिलाया. if the universal soul fills the whole world, it fills me too. जब वो परम पिता है और परम पिता सबका पेट भरता है तो मेरा भी पेट भरेगा. एक सुने होंगे, तो एक मलूका हुआ उनका वो दोहा है, बंदर करे न चाकरी, अजगर करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम. मतलब इतना बड़ा हाथी है, कोई जॉब नहीं करता है. चाहे बहुत से और भी इस तरह के जीव जंतु हैं जो जॉब नहीं करते हैं, बट स्टिल द फूड प्रोवाइडेड बाय the arranged by the super soul, or we can say universal soul. इतने बड़े हाथी का भी पेट भगवान भरते हैं. ठीक है? So that's the thing. If the universal soul fills the whole world, it fills me too. जब वो परम पिता सबका पेट भरता है तो मेरा भी भरेगा. Who am I? मैं कौन हूँ? But a part of the world. मैं कौन हूँ? मैं संसार का एक भाग हूँ. मतलब उस यूनिवर्सल सोल का एक पार्ट हूँ. The beggar asked, अब भिखारी उनसे प्रश्न पूछ रहा है, यू स्पीक द ट्रुथ ओ यंग ब्राह्मण. कहता है आपने सही कहा ओ ब्राह्मण देवता. देन ओ सोजिस, वो ब्राह्मण कहते हैं उसको, हाँ तुमने सच कहा. देन ओ सोजिस, बाय नॉट गिविंग मी फूड, तो हे
महात्मा लोग, अगर आप फूड नहीं दे रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं, तो यू आर एक्चुअली डिनाइंग फूड फॉर द यूनिवर्सल सोल। तो आप उस परम पिता को खाना देने से इनकार कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज द एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय द यूनिवर्सल सोल एंड द यूनिवर्सल सोल फिल्स द एंटायर वर्ल्ड, एंड if the universal soul fill the entire world, that universal soul also fill my stomach. So if you are not giving me food, then you are contempting to the universal soul. आप मेरा अपमान नहीं कर रहे हैं, उस परम पिता का अपमान कर रहे हैं. In that simple sense we can say the sages realized the truth, then that rishis and the sages realized this truth of what the beggar said and shared the food, that what the beggar said. So after this, the conversation and diplomatically he talked. At the last we can say he was wiser than that two sages. We can't say wisest. Simple sense. And shared their food with him. So how did the beggar convince the sages to share their food with him? कि किस प्रकार से उस भिखारी ने जो लोग भोजन नहीं दे रहे थे उनको भी कन्विंस कर दिया और राजी कर लिया, और उन्होंने भोजन उसको उस वाइज बैगर को दिया. क्लियर स्टूडेंट्स? यस. Yes, sir. Clear? Yes, sir. Yes, sir. You have to learn the two names of the great, Yes, sir. the Abhiprant Yes. Anak, and the Yes, sir. conversation which was done, and that person was known by the wise beggar. He was a Buddhist monk, and the Buddhist monk, the male are known as bhikshuk, and that female monks are known by the name of what? Bhikshudi. And they leave their homes for planning the salvation, or we can say whatever it's. Sir. Sir. कहिए Sir, क्या कह रहे हैं? उस तक आवाज नहीं पहुंच रहा है, जो कोई भी हो. मैं आगे बढ़ने वाला हूं, तो ये डिस्कस अबाउट कौन है ये. चलिए. So most Upanishadic thinkers were men. Clear? Any doubt? No, sir. बच्चे कुछ पूछ रहे थे, पूछने थे. हाँ बोलिए. Sir, please side. Sir, please side. किसी का कुछ पूछना है? No, sir. चलिए. No, sir. No, So when we sir. talk about the conversation is also related, because in the Upanishad there is a simple conversation or the dialogues between the student and the teacher. So we can say in the Upanishad we can also find the knowledge in the sense of the dialogue, in the form of the conversation process. Now, so basically when we talk about the Upanishadic thinkers, which are the intellectuals, basically they are males. But we can't say that even that all this dialogue conversation done by the males. Not females are also involved, and not only the males and the females of the high caste, even the lower caste, we can say the another lower caste student also, but those are only few of who has make the conversation with the teachers. And not only this, when the teacher got the understood that no, this student is able to understand, that they have given it. For example, when the Krishna reached to the Sandipani ashram, and from whom he is taken his studies, so that Sandipani sage understood the quality of that Krishna and given the another student who can understand within the many and many years. So within the 64 days of, we can say, the class, he completed his course in the Krishna and Balrama within the 64 days. कितने वर्ष में आपने? क्या चीज? जब आप देखेंगे सर ये कब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ? तो
किसको ज्ञान प्राप्त हुआ बताइए? बुद्ध 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 जी को को। बुद्ध को तकरीबन काफी साल लगे, अब इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे, इसमें काफी साल उनको लगे, उन्होंने तकरीबन 12 साल से ऊपर लगाया, ठीक है। He left his home affairs, he left his home because for getting the salvation, in whether it's related with Buddhism and whether it's related to Jainism, you have to left their homes. Without left their homes, you can't get or attain the salvation. Means you have to free from the worldly affairs, and those who can't free from the worldly affairs, they have to help them. Those who left the homes, like the bhikshuk and the nuns. Clear? कि जो लोग नहीं बन सकते हैं उनको उन लोगों की मदद करनी चाहिए, एड करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, जिन्होंने घर बार छोड़ दिया है। और शास्त्रों के अनुसार विधान यह है कि आप जितना कमाते हैं उसका 1/4 हिस्सा आपको दान कर देना चाहिए। अन्यथा जो दान नहीं करता है, शास्त्रों में इसका विधान है कि वो सब क्या है? These all are impure things. That the money they have made this is totally and totally wrong. But earlier it was practiced. Nowadays nobody is believe in this kind of, we can say in the simple sense, stereotype. They are thinking it's okay, वो लिखे रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. But it is written in the scriptures that how much percentage you have to donate to the sages, to the priest one, and whatever it. Clear? Then the Brahmins and the Rajas. So basically the Brahmins, Rajas, intellectuals, females, even the scheduled caste also. So another thing is, another Satyakama Jabala. Satyakama Jabala, who was a student, and that he get the knowledge from the teacher. First of all, he belonged to scheduled caste, we can say simple sense, or the Shudras. So the teacher denied, but the one teacher understand the quality of that student and give him the lectures, or we can say give him the teaching. And not only this, even some of the female also got, like Gargi and some other. And Jabali. 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 So Jabali is the name of the mother. So on the name of the mother, he got his name Satyakama Jabali. And he was the student of Gautama Rishi. Jabala. Gautama Rishi. Here, Satyakama Jabala. So on the name of his mother, Jabali, he got the name Jabala, Satyakama Jabala. Because earlier, even the son or the daughter known by the name of his mother also. Because if you've seen that the Krishna or the Ramayana or Mahabharata, first of all, Kunti Putra. Most of the time they talked about the Kunti Putra. They can also known by the name of Pandu Putra. But regarding that, they also use the mother name also. So at that time, it shows that the importance of the women in the society. So that's why they took the mother's name. Clear? But right now, we can say also, this time also the respect of the women. But mostly they have talked about the name of their fathers. Clear? Shankaracharya, then Upanishads and the thinkers. Then another is, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है. No, sir. No, sir. Then another one is No, sir. the grammar. Paninini, who was the grammarian? Panini. In Hindi, we can read Panini,
and English Panini, Pardini. grammary. सर आप कहाँ हैं सर? क्या चीज? सर आप कहाँ पढ़ा रहे हैं? भाई इतना देर मैंने पढ़ा दी, एक बालक पूछ रहा है कि कहाँ पढ़ा रहे हैं। इस तरह के भी कुछ लोग हैं। क्या ये लेटर जो ये ज्वाइन द लेटर बाद में आपने ज्वाइन किया है? हम पढ़ा रहे हैं पेज नंबर 6060 पे लेसन नंबर 6, पेज नंबर 6060 60. हाँ पेज 61. नंबर यस सर, लेसन नंबर 6 क्लियर? यस सर. Yes, sir. The Panini, the grammarian. This was one of the time when other scholars were at the work. Now, so he prepared a grammar for the Sanskrit. So he prepared the grammar, or we can say the Vyakran, for Sanskrit in the systematic way, and near about 3000 years ago. And it was arranged. They have written about the syllables and the consonants even in the grammar, and which were used today, I think so, still also. Now clear? Another one is Jainism. Yes. So tell me, we have to complete this? Sir, Yes. sir, Yes. sir, yes. शंकराचार्य कौन थे? Shankaracharya was a spiritual master of Hinduism. वो हिंदू धर्म के एक आध्यात्मिक गुरु थे, ठीक है? Who also Yes, talked sir. about in the sense of Upanishad also. Clear? In which you have read about the Shankaracharya in the 7th class regarding the sense of Bhaktism. Because, listen, one thing, there's a difference between Upanishads and the scriptures earlier, like Purans. They talked about some of the other things in the Rig Veda, Yajurveda, Samveda. They have told about the rituals. But at the earlier time, the rituals were not mandatory. But later it will become the mandatory. So that's why even the some thinkers thought, no, if someone who don't have possesses the money, then what will happen? Then he can't attain the salvation. So due to this, the Upanishad ideas and the thinkings, listen, the Upanishadic ideas and the thinking is totally based on the rational view. बहुत सोच समझ के उसमें डायलॉग्स हैं और बहुत बुद्धिमान लोगों के डायलॉग्स हैं. वो बात करते हैं कि सर ये जो दिखता है सब जितना ये सब आडंबर है और डायरेक्टली भक्ति मार्ग से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है? विच इज स्टिल क्वाइट अ कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड. इतना आसान नहीं, बहुत जटिल है उसको समझ पाना, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे आपको ये बुक अपने से पढ़ेंगे तो नहीं समझ सकते, समझ सकते हैं? No, sir. So No, sir. that's why I am here to teach you that by easily method you can understand, and still it also depend upon you regarding with your capability. आपकी कैपेबिलिटी कितनी है उसकी समझने की, क्योंकि इस क्लास में अनेकों बच्चे जुड़े हैं, सबका माइंड लेवल अलग अलग है, हर कोई अलग अलग तरीके से सोचता है, ठीक है? So it's depend on you also, it's depend upon teacher also. Not only teacher, means teacher in the sense that without the help of the teacher you can't understood easily, because in simple sense you can take the example of Lord Krishna and what Arjuna. अर्जुन को भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, डायरेक्ट भगवान समझा रहे हैं, but still he can't understood. So that's why at the last he given the sermons upadesha to the Arjun, and by with the help of the Krishna he can understand this. So without the teacher no one can understood. So that's why teacher is a medium to taught or teach the another one. Clear? So
even for the student, it is very easy to understood it. Clear? समझ आया आपको? Yes, sir. और Yes, sir. और इसमें किसी को कुछ पूछना है? No, No, sir. sir. No, sir. अभिप्रांतिन और शौनिक जो है दो ऋषियों का नाम है, इस नाम में कंफ्यूज ना करें। अभिप्रांतिक और शौनिक जो है दो ऋषि हैं। दो ऋषि जो है भोजन कर रहे थे, तभी एक भिक्षुक पहुंचा और भोजन की मांगता है, तो बोलते हैं कि हम अपना खाना तुम्हें नहीं देंगे। हम तो बोला कि आप किसकी आराधना करते हैं? तो बोला कि हम यूनिवर्सल सोल की आराधना करते हैं, उस परम पिता की। तो उन्होंने कहा कि उस परम पिता की आराधना तो मैं भी करता हूँ, तो मैं भी तो आप जैसा ही हूँ, और अगर आप मुझे भोजन नहीं देंगे तो क्या होगा? क्लियर? So right now, anything you want to ask? No, sir. चलिए, we'll move to the Jainism. और किसी को कोई पूछना है? बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं, आज 33 स्टूडेंट्स हैं। बहुत कम बच्चे जुड़ते हैं, बच्चे बहुत हैं, बहुत कम जुड़ते हैं, बहुत बुरा लगता है। चलिए, आदित्य कुमार कौन है? अनुज कुशवाहा, दीपशिखा यादव, मत बोलिए, अच्छा है। श्रेया सिंह, सुन रहे हैं मुझे? आदित्य सिंह, Yes, sir. अच्छा ये बताइए, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Sir, सर आ रहा है। आधे से ज्यादा बच्चे झूठ बोल रहे हैं, आधे से ज्यादा बच्चे मुझसे सर झूठ बोलते मुझे हैं। तो समझ में आ रहा है। शिवांगी सिंह को छोड़ सर दीजिए, मुझे भी आ रहा वो है। एक्सेप्शनल केस है। शिवांगी, मुझे आ रहा है सर, मैं ये बोल रही हूँ। ये कौन है? स्नेहा गुप्ता, स्नेहा गुप्ता, सर स्नेहा गुप्ता, चलिए छोड़िए, आगे चलते हैं। नाउ राइट नाउ वी टॉक्ड अबाउट द जैनिज्म। Yes, Jainism. It is also kind of the religion which was started by the Mahavir Swami, and the followers are known as Jains. The Jains were derived from the Jina, and this Jina means conqueror. The conqueror means not conqueror that village who subjugated the land. Here the conqueror means the person who win the heart of the others and who can control the senses. That person is known as conqueror. जो अपनी इंद्रियों पर जो अपनी इंद्रियों पर विषय काबू पा सके उसे काबू पा सके। कॉन्क्रीट कहते हैं। उसे यहाँ पर जिन्ना लिखा है, जिना, JINA, जिना, conqueror. In the bracket they have written about the conqueror. Clear? Jainism. जैनिज्म, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी, who was earlier than the emergence of Buddhism, but in this religion, सर क्या लिखे हैं वहाँ? जो लिखे हैं ये लिखे हैं, ध्यान से देखिए, बड़ा लिखते हैं आप। अब दिख रहा है? Jainism. जैनिज्म, ठीक है। अब देखिए, को ध्यान से समझना है। पहला जब मैंने महात्मा बुद्ध के बारे में बताया था, महात्मा बुद्ध belong from the Shakya clan, and that Jainism which is related or which is started by the Mahavir Swami, which was started by Mahavir Swami,
He belonged to a Lichvi clan. So don't confuse. तुम पढ़ रहे हो किसी को मैसेज भेज रहे हो? ऐसा है, ये कौन बातें कर रहा है, कौन किसको मैसेज क्या कर रहा है, हम उसको म्यूट कर दे रहे हैं। सर ये तो क्या हुआ है? जैन धर्म के थे ना, ये जैन धर्म के धर्म के थे ना। हाँ, बताएंगे इसके बारे में, पहले हम बता देते हैं। आप थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं इसलिए पहले ध्यान से सुन लीजिए हल्का सा। सो महावीर स्वामी बिलोंग फ्रॉम द लिच्छवी क्लैन। क्लैन माने कि इस सेक्ट के थे, ये इस गोत्र के थे मान सकते हैं, ठीक है। और तकरीबन 2500 साल पहले, 2500 साल पहले की घटना है ये, मान लीजिए। And not only this, the one common thing that whether we talk about the Buddhism or whether we talk about the Jainism, both were started by the Kshatriya clan. So we can say simple sense, this is also the kind of the uprising against the Brahmanical order. Because some person, some priest tell them that without the rituals, you can't attain the salvation. So the simple ones, they can't understood, as well as some people can't understood the things which is written in Sanskrit, because the Sanskrit was not understandable by the everyone. So that preachers regarding the Mahavir Swami and that Mahatma Buddha, they spoke the sermons or given the preachings in the simple languages, in the local dialect or in the vernacular languages, regarding with the different forms of the Pali and the Prakrit language, Magadhi and many more languages. So the language which is spoken in the Magad areas, so that Pali or the Prakrit known as what? Magahi. And at the different place, it is little bit different. Here, this one, in this way. क्योंकि आप साधारण सी बात है, इसको समझिए, जैसे भोजपुरी आप सब बोलते हैं, लेकिन अलग अलग स्थान पर जाते हैं तो भोजपुरी के उच्चारण में थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है। ये इसी प्रकार से समझा रहे हैं, यही आपको जो बताना है। Now that what? So, and the Lichvi group belong to a what? That belong to a Vaji Sangh. It belong to a Vaji Sangh, which is also we have discussed about the part of republic. The republic is related with Ganatantra, which is different from the monarchical system, because when we talk about the monarchical system in which what? The king eldest son will be the next king. So it's become the part of hereditary. But when you talk about this Sangha and the republic, so without the council meeting, they can't choose their ruler. Understood? So at the age of 30, Mahavir Swami left his home and roamed here. So after 12 years, means at the age of 42, he get Kavalya. And with the hard penance, he understood, or he also enlightened one person. Clear? So after when he understood the means, when he got the enlightened, then he given the sermons. To get the enlightenment, you have to leave your homes. So whether you belong to what? Man or woman, you have to left their homes. Clear? चलिए थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूँ पूछने के लिए. Still the 4 minutes are left. You can ask. Yes. Sir, please hide.
रिपीट कर दीजिए। वन बाय वन हम तो बताएंगे ही। अभी जितना हम बताएं इसमें से किसको नहीं समझ में आया उतना हम फिर दोबारा बताएंगे। हेलो सर वो जी संग बता रहे हैं ध्यान से देखिए। The Mahavir Swami started a new religion, or the people who follow the path of the Mahavir Swami or the teachings which is given by the Mahavir Swami, known as Jains. Known as Jains. And the Jains who follow the tradition and the custom which is given the Mahavir Swami, known as, later it become the part of religion of Jainism. So understood? So this one. Then I told you the one common thing, that whether we talk about the Buddhism and Jainism, both were started by the Kshatriya clan, and we can say it's an emergence regarding the controversy with the Brahmanical order of the Hinduism. Means because some people can't understood about which is written in the Sanskrit and whatever, so it is not understandable by everyone. So at that time the Mahavir Swami and Lord Buddha given the sermon in the local and vernacular languages, so the simple people can understood it. So that's why they accept it and embrace it. Embrace also, we can use the word. So that Mahavir Swami belonged to a Lichvi clan, which is a part of Vaji Sangh, and the Vaji Sangh is also related to the republican system. And we talked about the republican system. So at the age of the 30, he left his home and wandering place to place to get the enlightenment. So at the age of 42, means after the 12 years, after continuous 12 years he spent, he got the enlightenment. Understood? घर छोड़ने के हाँ सर कैवल्य क्या है? कैवल्य को कह सकते हैं ज्ञान है, वही कैवल्य जो एनलाइटमेंट है, जागृति प्राप्त होती है। क्योंकि मनुष्य अकेले में जाकर अपने आप को समझता है, वो साधारण से एक शब्द में कह सकते हैं सेल्फ रियलाइजेशन जिसको कहते हैं। तो सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब होता है हिंदी में आत्म साक्षात्कार, अपने आप को समझना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है। So to understanding the path to himself and what he will do, this is related with self-realization and it is also related to the enlightenment. Clear? Yes sir. अपने आप को जानना है, अपने आप को जान। बहुत छोटे थे तो शक्तिमान आता था, कुंडलियों को जागृत करो, तो कुंडलियां योग के थ्रू जागृत होती हैं और उसके लिए बड़ी पेनेंस लगती है, मतलब अपने आप को बिल्कुल अलूफ रखना पड़ता है। वर्ल्ड देखिए, वर्ल्ड में होते हुए वर्ल्डली अफेयर से अलूफ रखना है। क्योंकि हिंदुइज्म में सुना होगा 4 आश्रम बताए थे, क्या? ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ये लोग चले जाते थे, बट here yes they're telling that they have to roam place to place and give the sermons and tell to them, so the other can also understood about and try to understand the real truth or the real knowledge to understand himself. महात्मा बुद्ध कौन सा लेख है? क्या महात्मा बुद्ध? होने वाले तो अब कोई डिस्कशन नहीं है। क्या बोले महात्मा बुद्ध? क्या हम जानते हैं कुछ ऑफिस में दे पहले सीधे परत सा बनाते हैं। कीप क्वाइट सर हम कुछ जानते हैं। पेपर मतलब ऐसा है, लिसन, ये कोई भी जो कोई भी है, सो हम क्लास से पूरा इसको डिस्कस वो कर देंगे।